ತಕ್ಕಂತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಡಿ ವಿತ್ ಪರಶುರಾಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೀನಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು 16 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ನೋಡದೇ ಇದ್ದರೆ ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಅದ. SSLC ಪಾಸಿಂಗ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್, ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹಿಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಿಡಿಯೋಗಳಿದ್ದಾವೆ, ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ದಿನದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ 3 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗದ್ಯ ಭಾಗದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಒತ್ತಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದಿತ್ತು, लेखक द्वारा खरीदे हुए सेब की हालत कैसी थी? उत्तर बरीबेको. लेखक द्वारा खरीदे हुए सेबों में पहला सेब सड़ा हुआ था, 1 रुपये आकार का छिलका गल गया था, दूसरा सेब आधा सड़ा हुआ था, तीसरा सेब एक तरफ दबकर पिचक गया था और चौथा सेब बेदाग था मगर उसमें एक काला सुराग था. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, बाल शक्ति टोली ने अपने गांव को आदर्श गांव कैसे बनाया? उत्तर, बाल शक्ति टोली ने अपने गांव को आदर्श गांव बनाने के लिए गांव की गंदगी दूर करके परिसर को स्वच्छ बनाया. गांव में कई गड्ढे थे, उनको मिट्टी से ढांपा, कूड़ा डालने के लिए एक निश्चित जगह बनाया. गांव को हरा भरा रखने के लिए चारों तरफ पेड़ पौधे लगाए और घरों के सामने फलदार पेड़ लगाए. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, जैनुल आबदीन नमाज की प्रासंगिकता के बारे में क्या कहते हैं? जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो, जिसमें दौलत, आयु, जाति या धर्म पंथ का कोई भेदभाव नहीं रहता. ಅಂತ ಉತ್ತರ ಬರೀಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, बसंत और प्रताप अहीर के घर में क्यों रहते हैं? बसंत और प्रताप गरीब शरणार्थी लड़के थे. उनके माता पिता को कई दंगे में किसी ने मार डाला था. उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए वे भीखू अहीर के घर में रहते थे. ಅಂತ ಬರೀರಿ. वीडियो कॉन्फ्रेंस के बारे में लिखिए. उत्तर ಇದೆ, वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा एक जगह बैठकर दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ 8-10 दूरदर्शन के पर्दे पर चर्चा कर सकते हैं. एक ही कमरे में बैठकर विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों के साथ विचार विनिमय कर सकते हैं. ಅಂತ ಉತ್ತರ ಬರೀಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, महिला की साहसगाथा पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? महिला की साहसगाथा पाठ से यह सीख मिलती है कि परिश्रम, दृढ़ निश्चय, मुसीबतों का सामना करना, अथक परिश्रम ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. उसके साथ साथ महिलाएं भी पुरुषों के समान साहस प्रदर्शन कर सकती है. मेहनत का फल मीठा होता है, यह कथन इस पाठ भी सिद्ध करता है. सम्मेलन में लेखक को कौन कौन से अनुभव हुए, संक्षेप में लिखिए. उत्तर, सम्मेलन में लेखक का शानदार स्वागत हुआ. पहले दिन चप्पल तथा चादर गायब हुई, दूसरे दिन धूप का चश्मा, 2 चादर खो गई, तीसरे दिन कंबल और अंतिम दिन ताला तक चोरी हो गई. इस प्रकार लेखक को और भी कई अनुभव हुई. ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. मुख्य अतिथि की बेईमानी कहाँ दिखाई देती है? उत्तर, जब मुख्य अतिथि को आने जाने के पहले दर्जे का किराए देने की बात करते हैं तो दूसरे दर्जे में सफ़र कर 150 रुपये बचाना चाहते थे, और जब स्टेशन पर स्वागत के समय फूल मालाएं पहनाई जाती है तो वहीं पर सभी बेचकर पैसा कमाना चाहते हैं. अपनी चप्पलें खोने पर दूसरों की चप्पल पहनना, इस तरह मुख्य अतिथि की बेईमानी दिखाई देती है. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, रोबोनिल और रोबोदीप साधोराम की नौकरी कैसे बचाया? उत्तर बरीबेको. रोबोनिल और रोबोदीप रोबोटिक संघ से संपर्क साधकर साधोराम से संबंधित सारी बातों से अवगत करते हैं. संघ ने हड़ताल का आह्वान कर दिया. हड़ताल की घोषणा के परिणाम रोबोटिक कंपनियों के मालिकों के बीच हलचल मच गई. सभी मालिकों ने रोबोजित पर दबाव डालकर सक्सेना परिवार के साथ अनुबंध रद्द कराया. नौकर साधोराम को फिर से काम पर रखा लिया जाता है. दक्षिणी शिखर पर चढ़ते समय बिचेंद्री पाल के अनुभव के बारे में लिखिए. ಅಂತ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. उत्तर बरीಬೇಕು. दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी. बर्फ के कणों को तेज हवा चारों तरफ उड़ा रही थी. सामने कुछ दिखाई न दे रहा था. ढलान सीधी नीचे चली गई थी. तब बिचेंद्री को एकदम सांस रुकने का एहसास होने लगा और सफलता नज़दीक दिखाई दे रही थी. ಅಂತ ಬರೀರಿ. रोबोनिल को टाइप करने के लिए दिए गए विज्ञान कथा का सार लिखिए. मोस्ट इम्पोर्टेंट अदा.
विज्ञान कथा का सार था कि एक घर में नौकर किसी जानलेवा बीमारी से पीड़ित था। उसे काम से निकालकर एक रोबोट को काम पर रखा दिया जाता था। किसी तरह रोबोट को इस बात की जानकारी मिल गई। रोबोटिक संघ से संपर्क साधकर सारी बातों से अवगत कराता है। तब सब रोबोटों की हड़ताल द्वारा उस नौकर को फिर से घर में रख लेने का समझौता किया जाता है ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, लेखक को भेजे गए निमंत्रण पत्र में क्या लिखा गया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट अद। लेखक को भेजे गए निमंत्रण पत्र में हम लोग शहर में एक ईमानदार सम्मेलन कर रहे हैं। आप देश के प्रसिद्ध ईमानदार हैं। हमारी प्रार्थना है कि आप इस सम्मेलन का उद्घाटन करें। हम आपको आने जाने का पहले दर्जे का किराया देंगे तथा आवास, भोजन आदि की उत्तम व्यवस्था करेंगे। आपके आगमन से ईमानदार तथा उदीयमान ईमानदारों को बड़ी प्रेरणा मिलेगी ಅಂತ ಉತ್ತರ ಬರೀಬೇಕು। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, रेवड़ी बेचने वाले व्यापारियों की ईमानदारी के बारे में लिखिए। ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಈ ಥರ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್। इंटरनेट से कौन सी हानियाँ हो सकती हैं ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ। सो इंटरनेट वरदान है तो अभिशाप भी है। बैंकिंग फ्रॉड, हाइकिंग, पायरेसी आदि बढ़ रही है। मुक्त वेबसाइट, चैटिंग आदि से युवा पीढ़ी और बच्चे इंटरनेट की कबंध बाहों के पास में फंस हुए हैं। युवा तथा बच्चे अनुपयुक्त जानकारी प्राप्त कर रहे हैं जिससे लोगों का समय भी व्यर्थ हो रहा है ಅಂತ। ಸೊ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ 3 ಅಂಕದ ಏನೊಂದು 9 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಗದ್ಯ ಮತ್ತು ಪದ್ಯದಿಂದ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಗದ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪದ್ಯ ಭಾಗದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೀನಿ। ಸೊ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳಿದ್ದಾವೆ। ಸೊ ತಾವುಗಳು ನೋಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ 80 ಔಟ್ ಆಫ್ 80 ಆಗ್ತದೆ। ಆಲ್ರೆಡಿ 80 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸಹಿತ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ। ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸೊ ತಡ ಮಾಡದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಡಬೇಕು। ನಿಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ। ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಲಿ। ಮತ್ತೆ ನಾನು 3 ಅಂಕದ ಪದ್ಯಭಾಗದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಅನುವಾದ, ಭಾವಾರ್ಥದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೀನಿ। ಸೊ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು। ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅದ ಸ್ಟಡಿ ವಿತ್ ಪರಶುರಾಮ್ ಅಂತ, ಲಿಂಕ್ ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ। ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀವುಗಳು ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು। ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ। ಡ್ರೈವಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳ ಲಿಂಕ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ತಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೋಡಬೇಕು। ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಗ್ತೀನಿ 3 ಅಂಕದ ಪದ್ಯಭಾಗ, ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನು ಬರೀತಕ್ಕಂಥ